Anurag Kashyap, Vidhu Vinod Chopra, Farhan, Akhtar, Dibakar, Banerjee and others were seen at the launch of a book on Guru Dutt's films at a 5-star hotel in central Mumbai. Have a look. Pyasa was that film that introduced me to Guru Dutt. And the impact of it has been so much. The images of it haunt me till date. And taking a cue from one song from the film, I made an entire movie, Gulaal. Ye mehlon, ye takhton, ye tajon ki duniya. Duniya agar mil gayi. That song became the basis for an entire movie, Gulaal, that I made. So when I came to the industry, most of the authors wrote in Urdu. Most of the dialogue writers wrote in Urdu. And I came from Banaras without much baggage of cinema. And I was like, why don't they use spoken language? And when I saw Guru Dutt's movies, I realized Abrar Alvi and him, they were the first filmmakers who actually used a language that people spoke in. When you hear his songs, Ye Duniya Agar Mil Bhi Jaye To Kya Hai? When you hear Jinhe Naaz Hai Hind Par Wo Kaha Hai? All of these issues that he talks about, all these social taboos, certain discrimination, oppression, what he sees around him that he speaks about is relevant even today. The main lesson, I think, today's generation has to learn from Guru Dutt's films and Guru Dutt's career and his life is that we were just talking that his life more or less imitated this film. He was a broken man after that. Now, I don't know the exact details, you guys would know better. Even when you see Mr. and Mrs. I mean, Chaudhary Ka Chand he made because he wanted to make a hit film. And look at the movie he made. There is not this much compromise in a Guru Dutt film. So when you say Guru Dutt, for me, it means uncompromising artist. It means a man who stood by his conviction to his dying day. And that is something we should all aspire to be. Today it is even worse because you can buy a newspaper and put your picture. Do you know PK is what PK is? It's probably the biggest film here and there is no mention of PK in Bombay Times. Nobody has mentioned PK exists in Times of India, which is sad, I think. You know, somebody should say this PK, somebody has made this movie. There is no mention. There can be mention of a third-rate movie who pays the money to the press and that guy will be everywhere, the biggest hit of all times and that guy will be... It's damn sad, yeah. So we don't say it because we are scared now. If I say this now, I'm banned for the rest of my life and nobody will talk about me. And then I will not exist because I won't be on Twitter and Facebook and nobody will say Vidhu Vinod Chopra is great, so I'm not great. I know I'm great. There are two things. Munnabhai MBBS released on the day, empty theatres, totally empty, nobody went to see that film. Munnabhai MBBS, the film released, ready film was shown to distributors. Ready film, including Ronnie Screwvala, who wrote me a corporate letter, did not buy the letter. The movie, okay? He went, bought LOC. I'll tell you the amazing story. There was a guy called Munnabhai, who will, I hope he sees this on TV. He had paid me 11 lakhs for South India. 5 lakh he had given, he saw Munnabhai MBBS. रोते रोते गया मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बोलता है मैं नहीं लूंगा तो मुझे फोन आया मैंने कहा 5 लाख में दे दो उसने कहा सर 5 में भी नहीं दूंगा मैंने कहा तू फ्री में ले ले पैसे कमाएगा तुमको दे देना उसने कहा नहीं 5 भी आप अगली फिल्म के लिए रख लो I released the film in South of India. I did a business of 1 crore 67 lakh. Okay? Now, on Friday I had failed. Raju, now they call him Rajkumar Hirani. Raju was crying. I gave him 11,000. I said, this is for the next one. I asked how much money we have in the bank. I had still 3-4 crores. I said, make one more. This one is gone, so there is no money, but make one more. Till we have money, you make. So on Friday, MBBS was a failure. The director was crying. Saturday people went, Sunday it was full, then it became Munnabhai MBBS. Now, have we failed? Did we fail that day? No. For me on Friday also I had succeeded because I had made a great film. But I was a failure. But we know the director was crying. So who's a failure? My point is this, there are two failures. One is artistically you fail. I make a shit film. I made Kareeb for my wife Anupama, but it was a crappy film. So, I'm very sorry I failed as an artist. Okay? But otherwise, the other failure is ridiculous. You know, Kagaz ke Phool, today we are sitting here, that day it had failed. So for me, commercial success, and why I'm saying this to you guys and to you particularly, it should not affect you. पहले तो मैं एक चटखारे वाली बात कहूँगा जो ये कहते हैं फिल्म मेकर्स को नहीं कहना चाहिए. मैं चटखारे वाली बात ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई 28 वर्ड ढूंढे गए हैं.
जो मुझे अभी पता चला है, और कहा ये यूज़ नहीं है, क्योंकि वो वर्ड यूज़ ज़रूर कीजिए। आप ये बता दीजिए कि ये अडल्ट फिल्म है, ये PG-16 है। ये दुनिया में अगर हम हॉलीवुड में हमने बनाई है अभी फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस, उसको रिस्ट्रिक्टेड मिला है और लिखा है बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड लैंग्वेज। तो कोई ऐसे अगर वर्ड्स वाली फिल्म है उसको आप अडल्ट बना दीजिए। आप ऐसे कैसे 28 वर्ड, कल को आप बोलेंगे कि आप हेलो मत बोलिए, आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए। अभी तो ये तो बिल्कुल एक मेरे हिसाब से तो चटखारे वाली बात मैं कह रहा हूँ, एकदम बकवास और बेबुनियाद बात है ये लोगों को कहना कि आप ये कह नहीं सकते। हाँ देखिए, मेरे लिए बोला हम इतने टाइम से मैं लड़ाई कर रहा था एक छोटी सी कि फिल्म में वो लिखा हुआ आता है कि सिगरेट स्मोकिंग। हाँ, वो भी बिल्कुल बेकार बात है। हाँ, इसके बाद क्या चालू हो गया, अल्कोहल का चालू हो गया। अभी लेटेस्ट आपने बदलापुर में देखा है, कौवा लटका हुआ है, उसके नीचे लिखा होता है दिस इज अ VFX शॉट नॉट अ रियल क्रो। ओह रियली? अभी हर चीज के ऊपर एक डिस्क्लेमर जो है कोई भी डिपार्टमेंट, एनिमल बोर्ड ने भी डाल दिया। अभी तो सारे बोर्ड आएंगे। हाँ, वो जब आप बिना हेलमेट के हीरो नहीं, फिर हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, ये रोमांस जो है ये सही नहीं है क्योंकि ये एक्टिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है भैया। एक साल के अंदर पिक्चर साइड में कोने में आएगी, टेक्स्ट लिखा होता रहेगा। आप स्क्रीन प्ले पढ़ना चालू करिए, उसके लिए हम लोग ने अभी से छापना चालू। नहीं तो जैसे आप फरहान अख्तर कोई इमोशनल सीन और रोमांटिक सीन करेंगे हमारी फिल्म को लिखना पड़ेगा, ये बात सिर्फ एक्टिंग है क्योंकि ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, ये गलत बात। 1 से 2 से अभी 3 डिस्क्लेमर आने लग गए। और उसके अलावा शुरू में भी लिखा था इस फिल्म में सभी पात्र काल्पनिक हैं। हाँ, तो जब पहले ही सब काल्पनिक हैं तो फिर बाद के डिस्क्लेमर। देखिए, ये आज जहाँ हैं हम वहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री, हमारा एक पास्ट है, और हम आज अगर फिल्में बनाते हैं और आज अपने आप को हम आर्टिस्ट कहते हैं तो हम जो हमसे पहले हो चुके हैं ग्रेट आर्टिस्ट, उनसे सीखेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो मेरे लिए ये किताबें जो हमने बनाई हैं, जैसा आपने देखा 3 बुक्स इस वक्त है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाकी सब लोग पढ़ें, सब ये दिबाकर हैं, फरहान, अनुराग सब पढ़ें, हम पढ़ें, बाकी सब लोग पढ़ें ताकि दे गेट इंस्पायर्ड टू मेक बेटर एंड बेटर सिनेमा एंड ऑल्सो वॉच बेटर एंड बेटर सिनेमा। सो इट्स ऑल्सो फॉर फिल्म मेकर्स एंड ऑल्सो फॉर व्यूअर जो रद्दी फिल्में देख के खुश हो जाते हैं, अच्छी फिल्में देख के खुश होंगे तो अच्छा होगा। Honestly speaking, the fact is that the CBFC is a film certification body. So the fact is that they have to certify, rate a film depending on the content, that a certain age or below should not be able to watch because it's mature content, restricted content, and that truly is their function, you know. So I mean, the filmmaker should have the freedom to make the film that he or she wants to make, and it's the responsibility of the film certification board to say that okay, only this age and above, or then a universal audience can watch the film. क्या होता है कि जब भी सेंसर बोर्ड के बारे में कोई इशू होती है तो आप सबसे पहले आके फिल्म मेकर को सवाल पूछते हो कि आपको कैसा लगा, जबकि फिल्म मेकर उस सिचुएशन का सबसे वल्नरेबल विक्टिम है। जब किसी तरीके की इस तरह की प्रोस्क्रिप्शन होती है तो किसी फिल्म में कोई हानि पहुंचती है कि मैं अपनी फिल्म में ये नहीं यूज़ करता, वो नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर को बोलोगे कमेंट करने के लिए तो वो कमेंट करेगा कि नहीं ये गलत है, उसके बाद वो कमेंट करेगा, फिर उसी की फिल्म को बाद में प्रॉब्लम होगी। द फैक्ट दैट दिस इज रॉन्ग has to be said by people other than the filmmakers. More importantly, the ये opinion has to come from you. या ये जो भी हो रही है, अगर ये फिल्म मेकर्स के साथ हो रही है तो ये जनता के साथ भी हो रही है। तो फिल्म मेकर से बार बार बुलवा के कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपको अच्छे और चटखारे वाले बाइट्स मिल जाएंगे लेकिन इशू नहीं सॉल्व होगा। इशू तभी सॉल्व होगा जब जो फिल्में देखते हैं और जो फिल्में बनाते हैं वो मिलके बोले कि यार हमें डिसाइड करने दो हम क्या देखेंगे और हम क्या बनाएंगे। आप बताओ कि हाँ, इस फिल्म को इस उम्र के ऊपर के लोग देख सकते हैं और इस फिल्म को इस फिल्म की इस उम्र के नीचे लोग देख सकते हैं। बाकी हमको डिसाइड करने दो क्योंकि सोसाइटी तो हमारी है, तो सिर्फ हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा।